So today we will be discussing shear strength, different tests and how the shear strength is measured. So now we will begin straight away. What are the different shear tests that we perform? Some tests can be done in lab and some tests can be done in field. So there are some direct shear test, triaxial test, unconfined compression test and vane shear test. So these three tests are done in lab, but this test can be done in lab also and can be done in field also. Okay, so mainly we are discussing today the lab tests, and this vane shear test we will be discussing, that is conducted in field also. So there are other field tests also, that is let us say SPT number also, the standard penetration number test, or CPT number, cone penetration test. So there are different tests which are there for measuring the shear strength. Now for the very first thing here, direct shear test, what happens, there is a shear box there, which is this box here, this setup is entire, this upper movable part is there, alright, and this lower upper fixed part is there and lower movable part is there, because there are wheels by which it can simply move, alright. So this shear box is a setup wherein you have two chambers, alright, and two boxes. The soil is placed in here. When the lower part is moved, then what happens? The soil will be broken from this point. So you can say that the failure is occurring along this plane only. So the failure surface is already known to us, alright, because wheresoever is the partition between the upper half, alright, and the lower half, at that point of time, at that point of place, there will be the shear failure taking place. Now what are the advantages of these? We can see that it is simple to perform first of all, and soil specimen can be circular also or square also. Box is split into two halves, which I have already told you, it is some upper half, that is fixed one, and lower half, which is movable one. Also normal force is applied from top. So this force, you can see this P force here, this force is applied from the top on this sample. So this force is the normal force there, and this force, which is the movable part, alright, when the lower part is moved, then the shear force come into picture. So this point is there, normal force is applied from the top, shear force is by relative movement. You can see there is relative movement of what? The upper and the lower halves of this shear box, alright. So it consists of lower movable half, and it is a strain control test, alright. So what is strain control test? We will move on, we will see that thing. So there are two type of tests which can be performed. First is the strain control test, other is the stress control test. Okay, when you are trying to control the strain, okay, so whatever be the rate of displacement that you are trying to control. In stress controlling, alright, you are trying to manipulate the stress, you are trying to change the stress and seeing the results accordingly. So in this stress control test, you are changing what? You are applying different shear stresses, different shear forces. So see here, in this strain control test, a constant rate of shear displacement is applied to one half of the box. That is what half? That is the lower half. We are moving at a constant rate of axial, constant rate of shear displacement. Achha, what happens in this thing? That the peak strength is obtained, also the ultimate strength is obtained here. That means it can be observed via the graph. But in case of stress control test, what happens there? Here the shear force is applied in equal increments until the specimen fails. So let us say if first time you applied, let us say delta sigma 1, again you applied, after some time you again applied delta sigma 2, the failure was not observed, so you increased upon the force. Okay, let us say even if you have simply applied delta sigma 1, the same amount of force also, then what happens? Next time also you applied. So what happens? At this point you see the failure occurring, और जैसे ही यहाँ पे फेलियर अकर करता है, आप क्या कहते हो कि हाँ ये स्ट्रेस का वैल्यू है जिस पे जो है शेयर फेलियर मिला, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वाली स्ट्रेस और इस वाली स्ट्रेस के कहीं बीच में हो जहाँ पे फेलियर अकर किया हो. सो यू डोंट एक्चुअली नो कि किस पॉइंट पे फेलियर अकर किया आप, क्योंकि यूजुअली क्या कर रहे होगे, जैसे 5 का एक मान ली एक ग्राउंड फ्लोर बनाया पहले, देन फर्स्ट फ्लोर बनाया, लेट से 10 का हो गया, देन उसका सेकंड फ्लोर बनाया, लेट से 15 का लोड लगाया. सो यू आर इंक्रीजिंग द लोड. तो फील्ड के मुताबिक अगर आप बात करते हैं तो स्ट्रेस कंट्रोल टेस्ट फील्ड कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट करता है, बट इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीक स्ट्रेंथ आपको मिलती है, ऑलराइट, बट इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है
वो नहीं मिल पाती है, वो थोड़ा सा दिक्कत रहता है. सो स्ट्रेन कंट्रोल टेस्ट वहाँ पे यूजफुल है. अच्छा, what are the disadvantages here? First, I have already shown you what the failure plane is predetermined there in the diagram, because when this is the upper half, okay, and this is the lower half, so this the failure will be occurring along this plane only. This is the failure plane, okay, this is the upper half and this is the lower movable half there, okay. So this is the second point here. Failure plane is predetermined, though it may not be the weakest plane, because when you take the soil can fail from this end also, from this end also, or I can say this plane also, or this plane also. Failure can occur from anywhere, and where the failure will occur, whichever is the weakest plane at that point of time, at that point of place, the failure will be occurring. Let us say weakest plane is this, then the failure will be occurring from this point. But here we are saying that failure plane is the fixed one only, like this one is the failure plane, and we are not changing that failure plane. So it may be the weakest, it may not be the weakest. So we are not actually knowing that is it really the failure plane or not. So that is a problematic thing. And let us take out another point, that drainage conditions cannot be controlled, hence the pore water pressure cannot be measured there. So, and in actual field condition, the pore water pressure will be playing a very major role, because this pore water pressure will be affecting the shear strength or the bearing capacity of the foundation. Okay, when in this third point, see, shear stress distribution over the shear surface is not uniform, because now what happens in this case, if this is the surface, the failure plane here, what happens, जब इसको just हल्का सा move करेंगे, alright, और हम इसको move करके लेट से यहाँ पे ले आते हैं, alright, तो क्या हुआ होगा, जस्ट स्टार्टिंग में जो साइड में एजेस पे जो कंसंट्रेशन रहा होगा, उस समय पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगा होगा, तो यहाँ पे तो स्ट्रेस एकदम ज़्यादा आ चुका होगा अचानक से, बट फिर बाद में तो स्मूथ फेलियर हुआ होगा. और ऐसे ही सिमिलरली एजेस पे दूसरी साइड पे क्या होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा. यहाँ पे जब एकदम आपने पुश किया, इस लोअर वाले हाफ को मूव किया, देन व्हाट हैपेंस, जस्ट एजेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हुआ. बाद में तो फेलियर प्लेन पता था कि इसी पे फेलियर होना है, देन व्हाट हैपेंस देयर, यहाँ पे फेलियर हो गया, यहाँ पे तो shear stress यूनिफॉर्म हो गया, बट एट एजेस इट इज़ not uniform. Shear stress distribution is not uniform, but we have considered that it is uniform. Now let us take a look at a numerical here of this direct shear test, which will help us in understanding how this is helping in understanding the different shear parameters. Following are the results of 4 drained direct shear tests. So it is given drained tests, alright. So that is given to you on an over consolidated clay. So OCC is given to you. Size of the specimen is 50 mm by 50 mm by 25 mm. Find the shear strength parameters, alright. So what are the results given to you? There are 4 tests which have been done, 1, 2, 3 and 4. The normal force is 150, 250, 350 and 550. And what happens when you applied the normal force on this, let us say if this is a shear box, okay, this is the shear box here, and you applied the normal force, this P, okay, and you will be observing some, when you move this, you will be observing that when the P is, let us say 150 in the very first case, if this is 150, then what is the shear force which is causing the failure of the soil sample? If this is the soil sample here, so 150 पे कितना इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 155.5 न्यूटन का फोर्स देने पे सॉइल फेल कर रही है शेयर में. सिमिलरली 250 इज द नॉर्मल फोर्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग शेयर फोर्स इज देयर, एंड सिमिलरली 350 के नॉर्मल फोर्स पे इन्होंने कहा कि 253.8 पे इन्होंने शेयर फोर्स इतना ऑब्टेन हुआ जो कि फेलियर वाला पॉइंट था. देन 550 जब नॉर्मल फोर्स लगाया तब उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि 359.3 न्यूटन फोर्स लग रहा था at the time of failure. Okay, when you have to find out the stresses value, then we have to simply take upon the area of the soil specimen on which the force is acting. So if you take sigma dash, what happens there? It is normal force per unit area of specimen, and similarly if you want to find out the tau, that is the shear stress, what happens there? You will be taking into consideration the shear force. So shear force upon area of specimen. So let us take a look here. So we are simply for each and every test, okay, let us say this is test number 1, we are simply taking on the normal force there, that was let us say 150 in the very first case,
okay, and we simply take upon the area of the specimen 1000 into 0.05 into 0.05, and similarly we take for the tau, that is the shear stress. So, these are the two parameters that we are taking, sigma dash and tau. Okay. Now, correspondingly we got the values of normal stresses and the shear stresses at failure. Acha, one thing more is there, that these normal stresses are what? These are in terms of effective. Why? Because drainage is being allowed there. In the previous question itself it is given that the conditions are drained one. So, the values which will be mobilized, that will be what? Effective stresses. So, you can see that the effective stress, normal stress is this, and corresponding to that the shear stress will be 62.2. So, we have simply put in the values in these two formulas here, okay, in the very basic mathematics formulas, and then we have obtained the values of sigma and tau, alright. So, when you are trying to plot this, okay, a graph is plotted between what? Between the normal stress and the shear stress, and when this graph is plotted you can simply find out the points, okay. Let us say if the very first point C 60 के corresponding कितना आ रहा है 62.2. So, if you take this 60 and you are moving, it is 62.2. So, this is the very first point, then second point, third point and fourth point. Correspondingly you will draw the best fit line. So, in this case this is the Mohr failure envelope. Now, whatever angle which it makes, that is the internal friction angle. It is phi dash here because it will be the effective value, alright, because the drain test is there. पोर प्रेशर यहाँ पे मोबिलाइज होने दिया जा रहा है और पोर प्रेशर को क्या किया जा रहा है, ड्रेन आउट होने दे रहे हैं यहाँ पे. सो दैट इज वन थिंग, दैट इज द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो नोट द इंटरसेप्ट देयर, एंड दैट इंटरसेप्ट इज C dash, and by the graph you can see that C dash and phi dash value comes out to be 30 kN per meter square and phi dash comes out to be 27.81 degrees. Now we move on to the second test, triaxial test. Now in this triaxial test we can say that it is an advanced test, okay, because here the drainage conditions are being controlled. Now understand one thing, that in the very beginning only the direct shear tests were being performed, but with the evolution of the soil mechanics we moved on to the triaxial test. This is a very reliable method, very first point here, that is an advantage, because we are trying to control the pore water pressure, and when we can control the pore water pressure or we can simulate the field conditions in the lab, then what happens, you can easily find out what are the, you can usually simulate the field conditions in your lab itself, and when you can correctly analyze in the lab, then with very much good approximation you can apply it in the field. Okay. So, soil specimen is 38 mm in diameter and 76 mm long. So, you can say that if this is the soil sample here, so this is the 76 mm length here and the diameter is literally half. So, it is 38 mm. So, it is generally there. Very important thing that it is done in two stages. First stage is where an all round confining pressure is applied. In the second stage, an additional axial stress to cause shear failure is applied. Okay, pore water pressure can be measured. That is the very important point, because in direct shear test this was the one of the limitations there, because we cannot measure the pore water pressure. So, this is the figure here and this is the soil sample here, this portion here. Okay. So, the cell pressure can be controlled by this mechanism, and the pore water pressure, okay, can be drained out via these mechanisms. Okay. Axial load is being applied on the soil by this thing, we are doing this in the second stage also, because we are additionally applying some stress to cause the failure, that we will see in the subsequent slides there. Okay. Air release valve is there, so that air gets removed, because these will be affecting your test results. So, it is very much important that air is released. Okay. So, now let us see how the triaxial test works there. Now, first of all, the selection of the test will depend upon two things, the purpose of the test and the drainage condition of the soil in the field. Now, any soil without any test, if the drainage condition is not known, okay, then it is not according to the field conditions, and in that case what happens there, when the drainage conditions are not known to you, then you cannot say that the soil is let us say C5 soil or simply C soil, because a clay can also be acting as a sand.
when the drainage conditions are controlled. Okay, we will see it in the last portion today or in the next class. So, I will be discussing this point in great detail there. The shear strength tests must be conducted under appropriate drainage conditions. Alright. So, what are the drainage conditions that we can see? Now, that will simulate the actual field problems. Generally, the test is conducted in two stages. The first is the cell pressure stage or the confining stage, where all round confining pressure sigma 3 is applied, or we can also say sigma C is applied. हम इसको confining या cell pressure के नाम से sigma C बोल देते हैं. Second point is here, this thing, second point, here shear stage or deviator stage, where an additional force is applied in the axial direction, and this axial force or the axial stress is delta sigma, that is also denoted as sigma D. Okay, that is the D is for deviator stage. Okay, let us see here very first stage. What happens? The soil mass is given to you, and in this soil mass you are applying an all round confining pressure. That means you are horizontally also applying this some stress and also the vertical stress also, and the stress value in the horizontal direction and the vertical direction are same. Okay, so चारों तरफ से आपने क्या लगाया, एक सिग्मा 3 स्ट्रेस लगा रखा है. अच्छा, इस सिग्मा 3 स्ट्रेस जब आपने लगा रखा है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं. क्या? या तो आपने ड्रेनेज अलाउ कर रखा है या तो आपने ड्रेनेज नहीं अलाउ कर रखा है. Okay, so we will see what happens when the drainage is allowed and what happens when the drainage is not allowed. Okay, what happens in the second stage? अब आपने पहली स्टेज में क्या किया, आपने पहली स्टेज में सिग्मा 3 लगा रखा है. ओके, ऑल राउंड कन्फाइनिंग प्रेशर, दिस वन, दिस एंड दिस, चारों तरफ से आपने फोर्स लगा रखा है. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेज, यू आर ओनली अप्लाइंग दिस पोर्शन. ओके, दिस डेल्टा सिग्मा, you are only applying this delta sigma from in the vertical direction. So, in the vertical direction means, that means this here and this here in the vertical direction. Okay, so these are the two things here, delta sigma, delta sigma. Okay, now you can understand that horizontal direction में कितना force लग रहा है, यहाँ पे horizontal direction में कितना stress लग रहा है, that is delta that is sigma 3. Okay, अच्छा, अब vertical direction में कितना स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पे. सबसे पहले तो सिग्मा 3 तो लग ही रहा था. अब हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ एक एडिशनल स्ट्रेस और किया. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेज. हमने कुछ एडिशनल स्ट्रेस और किया, लेट्स से डेल्टा सिग्मा, और इस एडिशनल स्ट्रेस पे हमने क्या देखा कि सॉइल फेल कर गई. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट द डिवेटर स्ट्रेस. और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, दैट इज डेल्टा सिग्मा. अच्छा, ये यहाँ पे कोई देखिए, यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस तो लग नहीं रहा है इस वाले प्लेन पे. ओके, या इस वाले प्लेन पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा, यहाँ पे भी कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा. इसीलिए हम क्या कह दे रहे हैं, जो भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं ऑन दिस प्लेन और दिस प्लेन, दीज आर व्हाट, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ओके, सो अंडरस्टैंड हियर that this when added it is called sigma 1, which is acting in the vertical direction. Okay, so sigma 3 plus delta sigma here in the vertical direction is sigma 1, and in the horizontal direction only sigma 3 is acting. So that is the value of sigma 3 there. So sigma d is equal to delta sigma is applied in the axial direction. अच्छा, ये delta sigma कितना होगा, ये delta sigma उतना होगा जब तक soil fail नहीं कर जाती. Okay, so that is this value delta sigma here. Okay, पहली बार तो आपने sigma 3 लगा रखा है, बट उस टाइम पे फेल नहीं हो रहा है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से आपने प्रेशर लगा रखा है. सेकंड स्टेज जब आप लगाते हो, देन आपने सिर्फ और सिर्फ लोड बढ़ाया किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और तब तक आप लोड बढ़ाते रहोगे जब तक सॉइल फेल नहीं कर जाती, जब तक सॉइल फेल नहीं करती है. ओके, सो सिग्मा डी इज व्हाट, द डिवेटर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ failure. It is also called as confined compressive strength because the soil sample here is confined. All right, we will see the unconfined, then you will be understanding it more clearly because the soil sample here is confined. So it is the confined compressive strength there. Now sigma d at failure is what, sigma 1 minus sigma 3, that is equal to P by AF. So P is the load applied and AF is the area of failure. Let us say the soil fails, and at the time of failure, okay, at the time of failure this area is AF. Okay, let us say what happens if this failure occurs, okay, when the load is being applied on the soil, and what happens, this soil remolds like this. Okay, the original soil sample was like this. Okay, but in the failure stage it is this much. So the area of failure will now be
this area. Okay, this cross sectional area, you will be taking this cross sectional area. So this is the area of failure here and the load which is being applied. Alright, so in this way you can also calculate the confined compressive strength. So how we are trying to now manipulate the drainage conditions. So in the very first stage, let us say in the very first stage, when you are applying what? When you are applying delta sigma 3, or yes, I will say simply sigma 3 only. So what happens in this case? The water can be allowed to pass, drained condition, or water cannot be allowed to pass. In the second stage what happens? You are applying delta sigma. In this case also आप वाटर को ड्रेन आउट करने दे सकते हो या फिर नहीं करने दे सकते हो, या अनड्रेन्ड होगा या तो ड्रेन्ड होगा, इट डिपेंड्स. तो इस तरीके से आपके पास 4 कंडीशंस आएंगी. अच्छा, इन 4 में से कौन सी इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सारे टेस्ट तो परफॉर्म कर सकते हो. पानी का आप लेवल चेंज करते, पानी का मतलब आप कंट्रोल चेंज करते रहो एंड यू कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी टेस्ट देयर. बट इसमें से कौन सा फील्ड में काम करता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो ड्रेनेज कंडीशंस इन 2 स्टेजेस वी विल सी. बिफोर शियर, ओके, बिफोर शियर मतलब पहली स्टेज में क्या हो रहा था? पहली स्टेज में सिर्फ और सिर्फ आप प्रेशर लगा रहे थे, सेल्फ प्रेशर लगा रहे थे, चारों तरफ से फोर्सेस लगा रहे थे, जो कितना था? सिग्मा 3 था. अच्छा, उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि सॉइल अनकॉन्सोलिडेटेड रहे या कॉन्सोलिडेटेड रहे या फिर कॉन्सोलिडेटेड रहे. ओके, अच्छा, ड्यूरिंग शियर में क्या होगा? ड्यूरिंग शियर मतलब क्या हुआ? सिग्मा डी जब लग रहा है, ओके, सिग्मा डी लग रहा है, जो क्या है? डेल्टा सिग्मा. अच्छा, इस केस में क्या हो सकता है? इसमें भी यही हो सकता है क्या? या तो आप पानी अलाउ करोगे या फिर पानी को नहीं अलाउ करोगे पास करने के लिए सॉइल से. अच्छा, लेट्स से फर्स्ट केस हम लेते हैं यहाँ पे. अगर हमने पहली स्टेज में पानी को अलाउ नहीं होने दिया, ओके, देन व्हाट हैपेंस? दिस इज अनकॉन्सोलिडेटेड, सॉइल विल रिमेन अनकॉन्सोलिडेटेड. ओके, अगर हमने दूसरी स्टेज में भी क्या किया? पानी को अलाउ नहीं किया, देन क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज अनड्रेन्ड. ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज अनकॉन्सोलिडेटेड. अच्छा, इसको हम कह देंगे यू. यू इज फॉर अनकॉन्सोलिडेटेड हेयर, फर्स्ट वन यू, एंड सेकेंड इज फॉर अनड्रेन्ड हेयर. ऑलराइट, सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेज देर इज कंसोलिडेशन प्रोसेस एंड इन द सेकेंड स्टेज देर इज ड्रेनेज प्रोसेस. पानी दोनों में ही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, बट हमने यहाँ पे क्या कहा है? कंसोलिडेशन है या तो नहीं है. ओके, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि ड्रेनेज है या तो नहीं है. अच्छा, दूसरा हम केस लेते हैं जहाँ पे हमने यहाँ पे पानी को अलाउ किया. ऑलराइट, यहाँ पे पानी को नहीं अलाउ किया, यहाँ पे पानी को नहीं अलाउ किया. दूसरे स्टेज में क्या कर रहे हैं हम? इस वाले केस में देखिएगा, कंसोलिडेशन में, इस कंसोलिडेटेड में हमने क्या किया? पानी को अलाउ किया, पानी को हम पास होने दे रहे हैं. अब क्या होगा? पानी को पास होने दे रहे हैं मतलब सॉइल कंसोलिडेट होगी. ओके, सेकेंड स्टेज में मैंने क्या किया? सेकेंड स्टेज में भी पानी, यहाँ पे सेकेंड स्टेज में मैंने क्या किया? पानी को अलाउ नहीं किया. अच्छा, तो इस टेस्ट को हम क्या बोल देते हैं? CU टेस्ट. ओके, थर्ड टेस्ट देखिएगा, इसमें मैंने क्या किया? फर्स्ट स्टेज में पानी को अलाउ किया और दूसरे स्टेज में मैंने क्या किया? पानी को अलाउ कर दिया. सो until the entire process gets completed we will not be getting the results. अच्छा, इसमें पानी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, इन दोनों टेस्ट में अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? टेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा. जल्दी खत्म हो जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक क्विक टेस्ट भी कहते हैं, Q टेस्ट बोल देते हैं. अच्छा, इसमें कंसोलिडेशन होने का पूरा समय दे रहे हैं, पूरा पानी डिसिपेट आउट होने के लिए समय दिया जा रहा है, पानी को पास होने दिया जा रहा है थर्ड वाले टेस्ट में. ओके, और सेकेंड स्टेज में भी पानी को पास होने दिया जा रहा है. देन व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पे बहुत ही, अगर मान लीजिए क्ले होता है तो वो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और ज़्यादा टाइम लेगा किसके लिए? पानी को पास होने के लिए, क्योंकि उसकी परमिबिलिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है. सो CD टेस्ट क्या होता है? बहुत ही स्लो टेस्ट होता है. ओके, सो अब ये जो CU टेस्ट है इसको हम QRS का बनाने के लिए हम इसको R टेस्ट बोल देते हैं. ओके, सो दीज आर द 3 टेस्ट देयर. अच्छा, इसे हम कंसोलिडेटेड या अनकंसोलिडेटेड क्यों बोलते हैं? अच्छा, यदि सॉइल में अगर आप पानी पास कराते हो, ऑलराइट, और पोर प्रेशर डिसिपेट होता जाता है, तब तक होगा पानी, तब तक बाहर निकल रहा होगा. एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, जब हमने स्प्रिंग एनालॉजी पढ़ी थी उस समय हमने क्या देखा था कि जब तक पानी बाहर निकल रहा होगा, ओके, जब तक वाटर इज मूविंग आउट, तब तक सॉइल का कंसोलिडेशन होगा. जैसे ही पूरा पानी, जैसे ही एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बाहर निकल चुका होगा सॉइल से, सॉइल क्या होगा? सॉइल में कंसोलिडेशन रुक जाएगा, सॉइल में वॉल्यूम चेंज होना बंद हो जाएगा, सॉइल में जो चेंज होगा, हाइट का चेंज होगा, वो भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. और सेटलमेंट भी क्या होगा? उसके कारण ज़ीरो हो जाएगा. और जैसे ही वाटर ज़ीरो हुआ हम कह देंगे क्या? सॉइल पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड है. सो यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ पे हमने ड्रेनेज अगर दिया है तो पहली स्टेज में हम उसको मान लेते हैं कंसोलिडेटेड है, अगर नहीं दे रखा है तो हम उसको बोल देते हैं अनकंसोलिडेटेड है. ओके, सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग. अब हम क्या करते हैं कि फेल कब हो रही है सॉइल? अब फेल होने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेकेंड स्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं.
सेकेंड स्टेज मतलब कि सिग्मा डी। अच्छा, इसमें अब देखिए इस चीज़ को, यूयू टेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, पहले में पानी नहीं पास करने दिया, दूसरे में पानी पास नहीं करने दिया, तो इट विल बी अ क्विक टेस्ट, इट विल बी टेकिंग जस्ट 15 minutes, ऑलराइट। हियर द टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स आर मेजर्ड, CU and alpha sigma this phi u, okay, CU and phi u. So these are the total stress parameters. Because यहाँ पे क्या हुआ, पानी पास नहीं करने दे रहे हो, क्या होगा, ये पानी जब नहीं पास करने दे रहे हैं तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेस मोबिलाइज होंगे, नहीं हो पाएंगे, ओके, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता चला जा रहा है और वो बढ़ता ही चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स विल बी यूज्ड, ओके। इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे पिक्चर में नहीं आ पाया है, ओके। अगर हम पानी को ये अलाउ कर देते, जब हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे, समझिएगा इस चीज़ को, कंसोलिडेटेड और अनड्रेन्ड, यानी पहली स्टेज में हम पानी को पास होने दे रहे हैं, अनड्रेन्ड दूसरी स्टेज में हम पानी को पास नहीं होने दे रहे हैं। तो जब हम पानी को पास होने दे रहे हैं तब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस का पैरामीटर्स का यूज़ कर लेंगे। अच्छा, जब हम दूसरी स्टेज जब पानी को नहीं पास होने दे रहे हैं तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स को यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इट विल टेक 24 hours फॉर द फर्स्ट स्टेज एंड अप टू 2 hours फॉर द सेकेंड स्टेज, ऑलराइट। Because what happens, because you are allowing the water to pass through, when you are allowing the water to pass through, then what happens, it will take some time, alright, and this time is what, very much larger. And in the second stage, when the water is not allowed to pass, it is what, simply the second stage, it will take up to 2 hours only. Then if we talk about this total stress parameters here, okay, so in this case, C of what, CU, because it is a CU test there, and phi of CU. Acha, in the very first stage, this is what, consolidation is being taking place. So this is the effective stress parameters there. So here it is C dash, that is this here, and phi dash value. So these are the two effective stress values. These are suited for investigation of stability of earthen dams against failure caused by sudden drawdown of water, okay. So CD test will be what, पानी आप allow कर रहे हो, that means what, it will take more and more time. So it is very much slow, it may take up to 2 weeks depending upon the soil. Here the total stress parameters will be measured, that is what, this CCD and phi CD, okay. Effective stress parameters also measured if you are trying to control it, then C dash and phi dash here, suited for saturated sand or saturated clay under the long term here, okay. UD test is not possible because आप कह नहीं सकते क्या, पहली स्टेज में पानी को पास करने दिया गया, ओके, बिल्कुल भी सॉरी, यहाँ पे पानी को नहीं पास करने दिया गया। अब क्या होगा, आप फील्ड में इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हो क्या, नहीं कर पाओगे। क्या कह रहे हो कि पहली स्टेज में तो पानी को नहीं पास करने दिया गया और दूसरी स्टेज में पानी को पास करने दिया गया, ऐसा सॉइल में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप पहली स्टेज में कंसोलिडेशन हो चुका होगा, अगर पानी पास होगा और दूसरी स्टेज में आप कह रहे हो नहीं होगा, तो ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू।